हेलो एवरीवन, और कैसे आप सभी। नमस्ते सबको, स्वागतम आप सभी का स्वागत है फिर से स्टॉकर 2 के एक नए एपिसोड में, एपिसोड 3 में। तो जिसने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकता है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो लोगों स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 3, ठीक है। आज का एपिसोड 3 आप सभी का थैंक यू दिल से इंतजार करने के लिए। 11:20 पे स्टार्ट करनी थी, बट क्या हुआ, तुम लोग हंसोगे। मैं आइसक्रीम खा रहा था और आइसक्रीम माउस पे गिर गई और माउस पूरा चिपचिपा हो गया, और अभी भी चिपचिपा हो रहा है। मैंने माउस को पोंछ लिया, ठीक है, पर चिपचिपा हो रहा है अभी भी। कोई ना, लोड हो जाता है, क्या कर सकते हैं। जल्दीबाजी, मैं लाइव स्ट्रीम सेटअप करने में लग रहा था, आइसक्रीम रखी रह गई, आइसक्रीम पिघल गई और पिघल के सारी माउस पे गिर गई, ठीक है। वो तो अच्छी बात है, माउस चल रहा है ठीक ठाक, जबकि नया माउस है, अभी वारंटी में, ठीक है। वो तो अच्छी बात है, माउस चल रहा है अभी, ठीक है। आइसक्रीम गिर गई उस पर पिघल के। क्या करूँ लोगों, टाइम नहीं रहता मेरे पास किसी चीज़ का भी ना, क्या करूँ। तो इसी चक्कर में लेट हो गया मैं, 10 मिनट लग गए मेरे को पोछने में, साफ करने में पूरा। तो उन्होंने स्टार्ट करते हैं यार आज का ये एपिसोड 3, ठीक है, स्टॉकर 2 का। बहुत बातें कर ली, तुम सभी का स्वागत है एपिसोड 3 में, स्टॉकर 2 का। तो जहाँ से छोड़ी थी गेम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम लोग का लाइव चैट पढ़ लूंगा अभी मैं, पहले गेम स्टार्ट कर लेते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 आज का ये। No, but he's got you. Come. Stay away from Eugene. Damn show I could be putting on my grave right now. Back to the mainland. The gun. I don't like what's going on in Rostock right now, pal. War means death. And but I can't just up. So, the best. Take care, friend. When the factions are fighting, it's great for business. The Ragman, take a look. What? Don't even bother going to Ragman. Now that the treaty's been broken, I'm swamped with orders. Doesn't leave much room for creativity. You've got some tech to fix? Well, let's see it. Will your item remain the same? Come back anytime. Hey, man. I see you're back, huh? No, I'm just passing through. Come on, cut it out. It's payday, right? And you're thinking about what to do with your What do you expect from me? It's full of trash. And it's the right time to place a couple bets. Turn that overtime, double time. Well, maybe just a couple. Here's to Polovin. No clinking. You want to glasses. chat? He seemed like a decent. I need to find some people. We were just having a Ozerski mentioned you might be able to help me with that. And turn into a different person. You're making some friends, I see. Rat snatch washed up Ozerski is a from us. man with a heart of gold. And now When he's you're not giving being me pain in the gas. ass, anyway. Just trying to You get seem him out pretty of here. popular yourself. Trying to calm him down. Are you some kind of recruiter? Then he pulled his Bringing folks to Strider, mingling with scientists, cozying up to S.T.A.L.K.E.R. And you keep popping up wherever I go, too.
Must be the zone's will. Nah, there's a plenty of recruiters here without me. By the way, there's that stalker who showed up after the signal, S.T.A.L.K.E.R. Ever heard of him? He's a legend around here. I hear he's putting together a new crew. He doesn't like what's going on in the zone and he wants to shake things up. What happened to his old crew? I could tell you they found lots of rare artifacts, left for the mainland, and lived happily ever after. But in reality, not everyone made it back from their trip to the monolith. What's S.T.A.L.K.E.R up to? What's his plan? That's something you gotta ask the man himself. And if he doesn't trust you enough, you'll never find out. S.T.A.L.K.E.R is the type who keeps his plans to himself. How can I find this S.T.A.L.K.E.R guy? Nah. I might have said too much already. Either the zone's gonna help you, or S.T.A.L.K.E.R will find you himself. But I don't think you two would hit it off right now. As long as you and S.T.A.R keep looking for the Shining Zone, you better stay away from S.T.A.L.K.E.R. He doesn't trust or cooperate with anyone. Can you really blame him? Piss off, the warden says. I found folks in the zone I can trust. S.T.A.L.K.E.R just needs to try harder. Speaking of which, do you know anyone on this list? I know one of them, Dvupalov. He's a real grump when he's sober, which, thankfully, isn't often. He's usually holed up in his old hideout and doesn't entertain visitors. If you want to talk to him, you'll need to bring him a collar from a mutant. He used to do some research with the collars and now he just collects them. Talk about sentimental. Is this the type of collar Dvupalov collects? Wow! You've certainly been around the zone if you've managed to find one. You're shaping up to be quite a stalker. Now that you have the collar, you're good to head to Dvupalov's hideout. I'll send you the coordinates. If he asks you for a password, the answer is leash. Remember, if the professor offers you a drink, don't turn it down. It'll make the conversation smoother. But don't try to outdrink him either. You won't stand a chance. Scientist starts working at S.T.A.L.K.E.R. He gets assigned to a lab to study mutants and whatnot. A week, the ward's barracks are below my office. अरे तुम लोग क्या कह रहे हो भाई लाइव चैट में? इतना धड़ाधड़ मैसेज आए जा रहे हैं. क्या आप कहाँ से हो? पलक में जरूर हूँ. वर्मा भाई को सब पूछना होता है कौन कहाँ से है. कुणाल तुम्हें पता है तुमने एसेसिन के शैडोज की 2 एंडिंग्स खेल ली मजे मजे में? वो तो पता है यार, बताया तो था मैंने इनको. अंज भाई कह रहे पता है. और एक 3rd एंडिंग है जो कि तुमने खेली नहीं, बट कोई बात नहीं, 2 एंडिंग करी तुमने यार. 3rd वाली करी नहीं यार, टाइम नहीं था. और 2 एंडिंग कर दी यार, बहुत बड़ी बात है भाई. 2 एंडिंग दिखा दी ना मैंने, बस. बताया लिया दीदी BMG भाई को, उन्होंने बताया था. आलिया दीदी ये तो है, बड़ी तो है वैसे तुम लोगों से. क्या उन्होंने वर्मा भाई एंडिंग्स के बारे में बताया तो था अंश भाई. अंश भाई कह रहे चुप. अरे चुप क्यों करा रहे भाई? नोए वाली एंडिंग बेकार थी, यशुके वाली बढ़िया थी. हाँ नोए वाली एंडिंग यार हजम नहीं हुई मेरे को, तुम लोगों से कहा तो था मैंने. आधी अधूरी सी कहानी छूट गई. हाँ यशुके वाली बढ़िया थी एंडिंग, कुछ नहीं. The leash. Come on in, and don't drag your feet. If you only got one, don't expect a big payout. Hand it over. You're new around here, aren't you? Or have I just forgotten you? I had an assistant I'll never forget, Nightingale. It was a delight to work with and a great drinking buddy. It's a shame he's gone. Think you can fill his shoes? I wasn't planning to. I'm here about... I know what you're here about. The first ones in the house.
but we'll enjoy it right here on the spot. You can fetch the bottle from my lab. It's just down the hall. You couldn't find it. Bottles tend to vanish into thin air around here. Must be yet another one of the zone's little wonders. All right. Let's sample the goods. Let's have one. And then we can talk about what, where, and how much. Here's to the start of our partnership. ये चूज नहीं नीचे वाला करता हूँ. All right. Here's to our partnership. Not even a flinch, huh? That sort of bravado is gonna impress me. When you're drinking, you've gotta put your heart into it. So, where are we? How about another one? Let's toss another one back. You're definitely not a grad student. That's a good thing. Look, about those scholars. Leave them out next time. The shop's closed. What's the point of stocking up on collars if I don't have a leash? It was a promising project, sure. But it's time to bid it farewell. Bottoms up, Stalker. What project are you talking about? I told ya, Project Leash. The mutant control project. They cooked up all sorts of freaks, then tried to make gadgets to boss them around and zap them remotely if things get out of hand. As you know, they fucked up the later parts. When the project got shelved, those colored mutants were supposed to die peacefully in their cages, not run amok in the zone poking stalkers. So much for a promising project. But I suppose promises are made to be broken. How about a drink to that stalker? Let's have another one. Sure. To abstract thinking. If man is the measure of all things, then the measure of a man is 3 shots of this magic vodka. So go ahead, ask your questions while I'm feeling charitable. How do you destroy phantoms and defeat someone who can create induced illusions? Seen double, eh? You probably just had some bad vodka. Try some of mine. It's good for more than just keeping radiation at bay. When I saw the man who created those phantoms, I was stone cold sober. Ha ha ha, and I was stone cold sober when I saw evidence that it was impossible. But who am I to forbid you from living in a world of illusions? If you're really so eager, drag your ass to X5.
That's where the whole three-ring circus used to be. Try to find a blueprint for the suppressor. It's out to help you. I'm all out of vodka anyway. Come on. I'll give you the key card for the lab. The colors were a crude instrument. The suppressors, on the other hand, they were designed to dampen HKR young कर दो. abilities of a finer nature. मैं चुप हूँ क्योंकि इस गेम में बोले जा रहे हैं चपड़ चपड़. तुम लोग इनकी सुन लो. Where did I put it? यार मैं कहाँ रखा था. अरे भाई हमको भी चढ़ गई, अंकल को भी चढ़ गई. भाई लोंडो चढ़ गई भाई. Ah, look, a pickle. I'll save it for later. अरे 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 क्या हो गया? What are you up to? The artifact just popped out of the steel. Grab it, Stalker. अरे भैंचोद. क्या कुणाल कुछ हेल्प चाहिए? पोल ऐड करना है? नहीं नहीं, आज का पोल ऐड करें. नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए भाई. अंकल और पिएंगे. Light on your feet, Stalker. You can hang on to this one. You've earned it. You went after the artifact like a bullet from a gun. Seems like I gave the keycard for X5 to Sherpa after all. That's why I hate teetotalers. The bastard must have caught me in a good mood. Anyway, if you want the suppressor, you need to talk to that boring grad student yourself. He's over in Nagroprom, staying close to X5. And now for the fourth shot, the happiest of them all. क्या अंश भाई कह रहे जब चाहिए होता है तब नहीं. क्या चाहिए होता है? वे तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? क्या बातें चल रही है भाई? ओके तो कुणाल में चलती है क्योंकि कॉलेज का काम हो जा रहा है. हाँ ठीक है ठीक है. अंश मैं आई नहीं थी तो मेरे को कैसे पता चल? जब चाहिए होता है तो तब नहीं. अरे अंश भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया भाई? वो आई नहीं थी तो क्या उसे कैसे पता होगा फिर? अंश मैं आई नहीं थी तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या करना और क्या नहीं? वही तो सही बात है. अंश तुमको प्रॉब्लम है क्या मेरे से? मैं बिजी चल रही हूँ. रात को भी पढ़ाई करनी पड़ती है. हाँ ये तो है भाई. मैंने नोटिस करा अंश भाई बड़ा गुस्सा खा जाते हैं आलिया से. क्या
नहीं तो नहीं प्रॉब्लम है क्या? आईआईटी है, कोई मजाक नहीं, सही बात है क्या? रात को भी? अरे भाई आईआईटी है भाई। I ask you to vacate the premises. I'm occupying it and there's nothing here to take. Calm down, Sherba. Vupalov sent me. Is the professor doing okay? He didn't succumb to intoxication from that poison of his, did he? Its alcohol by volume is nearing pure ethanol. Not to mention the anomalous component. What a fall from grace. A great scientist resorting to making vodka. Tell me about Vupalov. So he's a great scientist? Professor Vupalov is a brilliant mind hailing from the Project X era, the mastermind behind the Controller project. He used to bring science to new heights. Now the only thing he can bring is a glass toward his lips. He's disenchanted with his life's work, you see? Nothing ever changes. If only the professor had taken a moment to peruse my notes instead of selling vodka. Why do you even bother helping Vupalov? How can I stand by and watch a scientist of his caliber kill the few brain cells he has left? He has invaluable knowledge and skills, the kind that are not taught at Malachite, especially nowadays. The professor has no right to go down this path. Vupalov sent me to get the key card for X5. I'm looking for the Phantom Suppressor. It took Vupalov a whole 6 months just to remember my name while I served him food every day. And now he tells you about the card right away? Did you drink with him or something? It's tough to avoid having a drink with him. That stuff is pure poison. All right, I'll give you the card. It's too risky for me in there anyway. But you've got to promise me that you'll search X5 for any papers related to the Controller project and bring them back to me. Since I'm headed to X5, tell me about the lab. Until recently, no one even knew it existed. The research there was classified, and the lab had been mothballed for quite some time. Then UT did some cleanup with heavy explosives there, and found hidden levels beneath Agroprom. I used certain informal channels to reach out to the professor. That's how I found out it was an old mutant research lab. I can't even begin to fathom what's going on in there right now. Why do you want those papers? I tried to convince Professor Vupalov that I'm a worthy successor to his great work, but all I received from him was a couple of his drafts, one of which had been used as a food wrapper. I'm talking about research that could etch our names into history. Since the professor doesn't seem to recognize it, I'll take it upon myself to finish the job for him. Tell me what you know about the Controller project. The Controller project did involve some research on phantoms, but its main objective was to develop specimens modified with both biological and technological enhancements. Unlike their mutant predecessors, which were impossible to keep in their cages, these were meant to be trained as soldiers to protect Project X personnel. Can you imagine? Not even S.T.A.L.K.E.R is attempting anything like that nowadays. They haven't even managed to create a single new specimen.
Hand me that key card, and I'll see what I can do about your papers. All right. It's not like I've got much of a choice. But keep those papers in mind, Stalker. You'll need to head all the way down, but if you're willing to do the job, I'll make it worth your while. I'll go check on the professor in the meantime. Seems like every time I look away, he's got a new drinking buddy. एक तो ये ना, ये जो पड़ा रहता ना, ये जो भी केमिकल है भैंचो, ये बताऊँ कैसा लगता है। जब मैं छोटा था ना, यहाँ के जो बच्चे थे ये वाले स्कूल में, जहाँ से मैं बचपन में पढ़ता था, जिसमें भैंचो जो अभी इतरा के घूमते ना बच्चे, उनकी बचपन में हरी हरी नाक बैठती थी। लोडो तुम लोग हंसोगे, तुम लोग कहोगे हरी हरी नाक कैसी होती, मेरे को भी नहीं पता था। जब मैं फर्स्ट केजी में था ना, तो उनकी हरी हरी कलर की नाक निकलती थी, हरी हरी कलर की। मैं कहा हरी हरी कलर की नाक निकल रही है। मैं कहा मेरी तो आज तक निकली नहीं। और अब साले वो स्टाइल मारते फिरते हैं जिम में गेड़ियाँ मार के, लूंडियों को बिठा के स्कूटी के पीछे। मैंने कहा वाह वंच वाह, ये वही बंदे जो स्कूल में हक देते थे और हरी हरी नाक निकलती थी। भाई स्कूल में कौन हकता है यार, कितना भी छोटा बच्चा हो स्कूल में कौन हकता है यार। यहाँ के बच्चे हक देते थे बेंच पैंट में, बता जा रहा, और बैठे रहते थे चुपचाप, साले बताते भी नहीं थे कि मैंने हक दी है। यार एक तो ये गेम में ना कैरेक्टर्स बोले जा रहे हैं, इसलिए मैं चुपचाप खेल रहा हूँ।
You're having trouble sleeping too, I see. Let's get started early today. We're going to explore how your brain responds to metaphors and imagery. Empathy and abstract thinking. Those are the traits that separate us from simple beasts. And there, what separates you from the other mutants? In theory, at least. I rummaged through my library and came across something that suits our circumstances perfectly. I hope you won't mind a little poetry. Not backwards, forwards is the spirit side. This moment now alone is our delight. ओए 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 क्या लाउड स्पीकर में बकबक हो रहा है सिस्टम एरर manually yet again, jeopardizing a scheduled experiment. This is not the first case of negligent handling of crucial Project X documentation. This matter needs to be addressed at once. Any documents in the control room should be off limits to lab assistants. Last week, ढूंढो तुम लोग गुस्सा तो नहीं हो रहे ना लाइव चैट नहीं पढ़ रहा मैं रुक जाना पहले कर लूँ मैं इसमें सीरियस सिचुएशन हो रखी है गेम में आराम से पढ़ूंगा लाइव चैट अभी रुक जाओ थोड़ी देर में इतने तुम लोग बकचोदी पेल लो अच्छे से
I have observed he's more than a work of art. He hasn't ceased to amaze us since he was connected to the Monolith Network. Faust opts to encourage the fighters, to inspire them, rather than relying on his control abilities. He's not just a soldier, he's a general. Yes, you make a good point. Remind me, where are the blueprints for the suppressor? My head. Fuck. I can't let history repeat itself. टट्टी कर रहा है Today's क्या March बच्चे? 3rd, 2017. You're क्लच करने के S.T.A.L.K.E.R. बाद है मेरे को. You used to work at C.I.R.C.A, but you quit and tried to sabotage X-11. You failed. Escape to the mainland. Go into hiding. Then come back and make sure those bastards can't complete Project X.
भाई सास ससुर बोलने लगे भाई हमारे प्रोटैगनिस्ट भाई की तो। Something's wrong. मैं चुप रहता हूँ तुम लोगों को फील आती है जैसे कि तुम मूवी देख रहे हो तुम लोग। तो बाहर देश में नो कमेंट्री वाले गेम प्ले बड़े हैं। बाहर देश में ना बाहर देश में ना अंग्रेज लोग ना उन वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें बोलता नहीं है यूट्यूबर कुछ। तुम लोग अच्छा लगता है वैसे अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो। मूवी वाली फील आती है तुम लोगों को? You find that key. Can't you just move on? When are you going to let it go, huh? I was worried. Haven't you been following the news? The zone's going After that, it's just humanity repeating itself. You're Slostic, the Stalker. He's back. Those papers I mentioned, do you have them? Where are your manners, young man? You won't even offer a man a shit and pour him a cold one? Here. I don't want to be anywhere near these things. This is... Yes! This is it! At last! There's nothing exciting in there anyhow. I've told you before, young man. If even my own work can end in failure. Faust wasn't exactly a failure, in a way. बोला करो अंश भाई क्या बोला करो BMG भाई X network, brought the monolith back and caused a bloodbath all over the zone. So होने का एहसास दो your project? The abilities you incorporate? Shut up! I knew I was right all along. So that bunch of old farts in pots haven't given up on my research. Hooking him up to the monolith was a stroke of genius. Thanks for those papers. They're a treasure worth all the years I spent at Malachite. We'll stay in touch. I've got grand plans for the future. अब पढ़ता हूँ तुम लोगों को लाइव चैट। अब मेरे बकचोदी होने लगी गेम में। I've got the suppressor. It should shield me from Faust's influence. क्या किसी ने कहा इन लोगों ने बताया था कल? क्या बताया था? मेरे को तो दिख ही नहीं रहे ऊपर के चैट्स। कल का अकाउंट डीएक्टिवेट क्या एक्टिवेट कर ले सॉरी एक्टिवेट कर ले। तेरे से बात करना चाहती हूँ डीएम में। एक एल्बम का डिसीजन करना है। अंकल का दारू पीकर
पी के आँख लाल हो गया। ओके कर लूँगी एक्टिवेट, बट मैं सोच रही हूँ न्यू अकाउंट बनाऊँ। एल्बम किस टाइप की है? अरे ये सब क्या पढ़ रहा हूँ मैं, नीचे पढ़ूँ यार। कुणाल कुल छाप चाहिए, अच्छा ये तो पढ़ लिया था मैंने। IIT कोई मजाक नहीं, क्या हो गया? ये भी पढ़ लिया था बेंचो, इतने ऊपर चैट्स क्यों दिखा रहा है यूट्यूब मेरे को? IIT कर लोगी मुझे पता है। पढ़ाकू है हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा। हाँ ये तो है भाई, पढ़ाकू है सबसे ज़्यादा। स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लाती थी और फिर एग्ज़ाम क्रैक करके IIT में एडमिशन लिया उसने। तो टैलेंटेड आलिया दीदी, टैलेंटेड की जगह पढ़ाकू बोलोगे तो सही रहेगा। पढ़ाकू लोग। अरे पलक आप ले लो कंट्रोल चैनल का। कहाँ चला गया वर्मा भाई? नहीं आलिया ज़्यादा अवेलेबल रहती है मेरे से ज़्यादा, इसलिए उसके पास एक्सेस नहीं है। वो मतलब आलिया क्लोज है ज़्यादा BMG भाई के। वर्मा भाई को बड़ी चुल रहती है। मैं तो अब एक्टिवेट हुई हूँ नहीं हूँ। लड़कियों की बातें देख रहा हूँ चुपचाप। वर्मा भाई बड़े सियाणे हैं, चुपचाप रहते हैं कई बार। आलिया एक बार मद्रासी बोलकर दिखा प्लीज़। कभी तेरे मुँह से मद्रासी नहीं सुनी मैंने। ये क्या था पलक? ऐसे तो तू बोली पंजाबी बोलकर दिखा, बाद में करेंगे बात। अभी चलती हूँ मैं, तेरे को पता है स्टडीज़ में अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं मेरे को। बाय सबको, बाय दीदी। जिस दिन फ्री होंगी तो आ जाऊँगी। टेक केयर BMG भाई को। वर्मा भाई को बड़ी चुल रहती है भाई। वो टेक केयर बोल के गई तो वर्मा भाई कह रहे टेक केयर। हाँ वर्मा तेरे को बड़ी चुल रहती है कसम से, हर बात नोटिस करता है। पलक ने भी कह दिया कह सॉरी पलक, मुझे पता क्या, मैं पता लगाने में रहता हूँ BMG भाई की बंदी कौन है। अरे बहन चौध, एक तो CID के 14 बने हुए भाई, 14 CID है वर्मा भाई। मैं खुश हूँ, मिल गई ठंडक। मैं हूँ अच्छा। हाँ ये पता लगाया। मजाक कर रही हूँ, सच मत मान जाना तुम लोग। क्या पता लग गया ब्रदर? सिर्फ ये पता लगाना चाहता है कि BMG भाई की बंदी कौन। मिलेगा क्या वैसे इनको लगाने से, पता लगाने से? पता नहीं, शायद सब जगह की खुजली मिट जाएगी। सही कहा, बोला करो BMG भाई होने का एहसास तो। हाँ भाई मैं बोलूँगा। ये भाई डब्बा रखा है यहाँ तो। GTA 4 में वेंचो चूतिया से दोस्त मिल जाते हैं, उनके चक्कर में मरता रहता हूँ वेंचो में। तू इस भाई के चूतिया से दोस्त है। अंश भाई ओ वर्मा भाई क्या कह रहे हैं? BMG भाई आपकी आवाज़ सुनकर मेरी तो कच्ची गीली हो जाती है। अरे वर्मा भाई क्या है यार? बकचोदी करा दो भाई। BMG भाई आपकी आवाज़ सुन के तो मेरी कच्ची गीली हो जाती है। क्या बेंच में मैं क्या ऑर्गेज़म दे रहा हूँ बेंच? मेरी आवाज़ ऐसी है क्या जो कच्ची गीली हो जाए तुम्हारी? वर्मा भाई अद्दा यार
वर्मा भाई तो वेंचर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे। आपकी आवाज ही तो सब कुछ है बीएमजी भाई। ओ आरजे हो ना वेंचर में, पूरी मॉर्निंग दिल्ली बोलता हूँ मैं चला चला के। Oh yeah, you guys sure know how to throw a party. We didn't plan this when we turned on the lesser एक तो Stalker 2 की but we can't let Faust turn the zone मोशन into कैप्चरिंग भी zombie बेकार हो land. रखी है। The zone bows to no one. Stalker 2 This is going to be a इस real गेम की भी mess. मोशन कैप्चरिंग The बेकार है, Monolithians Assassin's are Creed Shadows की creative, तरह। but they're stubborn as hell. ऐसा लग रहा है 2017-16 की गेम खेल रहा But हूँ if you मैं। need time to gear up, this is your देखना जरा last chance. इसका मुंह। If you're ready, I'll brief you on the plan. ऐसा लग रहा है and कितनी off we पुरानी go. गेम खेल रहा हूँ मैं। I was born ready. I live for हम this तो जब से stuff. पैदा हुए हैं जब से रेडी Let's रहते get हैं। down to business. You see the Dugas? We can't storm it head on. नर्स ने हमें देखा था ना Faust तो and कह रही that थी C बच्चा नहीं radiation रेडी will पैदा fry हुआ our है। brains before we even get close. But we haven't been sitting around and we've got blueprints from the underground utilities. Turns out there's a sewer line running from the firehouse straight to the Dugas. It's a quiet way in and the patrols won't see us. You gotta get to the transformer room and shut down the Dugas. Once you're done, we'll take care of the Monolithians while you take on Faust. Any questions? Any complications I should be aware of? The sewers ain't exactly a walk in the park. They're crawling with mutants. But I'd rather take on critters than Gauss snipers any day. You'll manage. Shutting down the Dugas might make a little noise. So be ready for some armed guests to crash your little party at the substation. Stay on your toes. Any guards patrolling the substation? Our teams report that Monolithians don't give a damn about the transformer room. Plus, we've got a couple tricks to keep them occupied while you're there. As for the ward, after the hit they took, they won't be coming anywhere near the Dugas again. They got the memo. I've got my part sorted. What's your plan? We've got all our friends gathered. Did you see anyone on your way here? That's the point. Today, the Monolith is gonna find out how many folks are really with S.T.A.L.K.E.R. But why ruin the surprise? You're the last piece of the puzzle. Once you get down there, my unit commanders will go about their business. The Monolithians have us outmanned and outgunned. But if we can distract and divide them, their brute force won't count for much. I'll shut down the Dugas, and I'll deal with Faust. Attaboy! Now get into the tunnel before new Monolithian patrols show up. The signal is patchy down below, so make sure to get to the radio room. That's our first communication point. That's the gist of it. We'll figure out the rest as we go. March, Mugwort, China. Get to your squads and take positions. Let's roll. दिल की बढ़ूंगा जरा सुन के तो जा। प्लक्सिस कहाँ? क्या प्लक्सिस चली गई क्या? एक वॉचिंग हो गई कुणाल, मैं यही हूँ, कोई स्ट्रीम में रहूंगी, डेली आऊंगी रात को। अब हो गई 3 वॉचिंग, मैंने ठीक करी है। क्या वर्मा भाई क्या बोले? 3 वॉचिंग हो गई मैंने ठीक करी। क्यों वर्मा भाई आपने ऐसा क्या करा है? ऐसा क्या कर दिया भाई? वाह भाई वाह, वर्मा भाई ने तो बनाया यूट्यूब भाई। वर्मा भाई ने बनाया यूट्यूब। वर्मा भाई है असली ओनर यूट्यूब के भाई। अगर वॉचिंग ठीक कर सकते हो तो भाई मेरे व्यूज़ और वॉचिंग भी बढ़ा दो वर्मा भाई। लोगों तो पहुंचा दो मेरी लाइव स्ट्रीम, अगर वॉचिंग ठीक कर सकते हो तो। गलत कह रही है क्यों वर्मा? यूट्यूब तुम्हारे चाचा का लड़का है जो तुमने ठीक कर दी। वही तो सही कहा। चाचा का लड़का है यूट्यूब वर्मा भाई तुम्हारे। अरे मर जाओ भोजली वाला, मर क्यों नहीं रहे? मर ले। तो छोटी ज्यादा चीजें परेशान करती है भाई। क्या अंश भाई कह रहे हैं वर्मा भाई यूट्यूब की ओटाची है क्या? क्या वर्मा भाई यूट्यूब की बत्ती पतली है क्या? क्या वर्मा भाई यूट्यूब की बेटी पटाली है क्या? अच्छा ये लिखना चाहते हो क्या? नहीं वर्मा भाई कहाँ, नॉर्मल लड़की तो सेट नहीं कर पाते, यूट्यूब की बेटी सेट करेंगे वर्मा भाई।
ग्लिच है यूट्यूब का, वो तो होती रहती है वॉचिंग कम ऊपर नीचे। अरे नहीं अंश भाई, अच्छा क्या कुणाल बिजी है गेम खेलने में? नहीं तो एक बकचोदी करती मैं। कौन सी बकचोदी भाई? इतना भी बिजी नहीं हूँ मैं गेम खेलने में। चोरी हो रही है क्या? पलक तुम्हारा बर्थडे कब आता है? अब बर्थडे पूछना है भाई सबको मेरा। वही तो वर्मा भाई का चूल्हे डेट ऑफ बर्थ ही बता देती हूँ। 8 मार्च 2004। खुशब ले बहनचो, डेट ऑफ बर्थ ही बता दिया। ले खुश हो गया वर्मा भाई। मिल गई होगी ठंडक। अभी भी ठंडक नहीं मिलेगी। अरे बर्थडे पूछ के क्या करोगे वर्मा? तुम सबसे सवाल पूछते हो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। क्या सवाल पूछते हो अंश भाई? पूछो वर्मा भाई से आज तुम सवाल जवाब करो अंश भाई। वर्मा भाई जब भी आ जाएंगे। Hey, Stalker, come in. What's taking you so long? Hurry up! Move! अरे बहनचोद, फाइनली गए। क्या बकचोदी थी लोंडो ये? क्या पूछो भाई? सच का सामना खेलते हैं, आमना सामना। अच्छा आमना सामना खेलेंगे वर्मा भाई। सच का सामना खेल नहीं पाओगे भाई सच का सामना वर्मा भाई। इंसान पे कितने दांत होते हैं? अंश भाई पूछ रहे इंसान पे कितने दांत होते हैं। अबे इतना इजी सवाल कौन पूछता है अंश भाई? अंश भाई पक्की बात है कुछ बकचोदी करेंगे वर्मा भाई से। अंश भाई पक्की बात है बकचोदी करेंगे कुछ। There you are. I got here as fast as I could. What's the latest? So far, everything's going smoothly. The fanatics are suspecting something, but that was part of the plan too. Time to open the presents.
That'll keep the Monolithians busy while you make a run for the transformer room. We'll get in touch once you're there. China, we're ready. About time. Let's get this party started, Commander. तू छड़या मैनू मैं तां गिणदी आस ही छड़या Some weapons. Can't tell what it is. Don't even think about engaging at all. Let the sniper handle it. क्या बकचोदी चल रही है क्या यार? इतना इजी सवाल 32 होते हैं। कितनी बार मुझे मारते हो? The path is clear. This is your moment, Skip. The rest of you, let's keep the fanatics running in circles. Stop. We've got a squad coming in from the northwest. They're skirting around the checkpoint. Good. Lead them away from the rest, as far as you can. Make it quick. We're getting antsy waiting for them here. You'll find no shelter from the monolith. मैंने छड़या मैनू तां गिणदी आसी छड़ गया। क्या एक काम करते हैं, कुणाल के साथ गेम खेलते हैं क्यों है नहीं, जिससे बोर नहीं होगा कोई भी। खेलो खेलो भाई, खेलो भाई, मैं तो रेडी हूँ। ट्रूथ एंड डेयर मत, ट्रूथ एंड डेयर ही हो गए तो सच बोलना होगा सबको, पर डेयर नहीं करना भाई। डेयर की बोतल कहाँ से घूमूँ मैं चल में? खेले बताऊँ सब, मैं तो रेडी हूँ भाई। सही आइडिया वैसे। अंज भाई कह रहे तुम बताओ। मैं तो रेडी हूँ पलक, तुम जो बोलो वो करूँगा। हाँ वर्मा भाई कहाँ मना करेंगे। 7 बार दिन में 7 बार मारते हैं भाई मुठ वर्मा भाई, हिम्मत है भाई की। वर्मा भाई खत्म हो जाओ इसी दिन। बट जब से स्ट्रीम पर आने लगा हूँ तो 5 बार मार पाता हूँ। हाँ कितने दुख के साथ कह रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा काम करते थे। थैंक्स बोलना चाहिए वर्मा भाई, मुठ मारना कम हो गया है। जैसे स्ट्रीम पे आते हो तो पहले 7 बार मारते थे, अब स्ट्रीम पे आते तो बस 5 बार मार पाते हैं।
position, boss. The garage 20 to the north. We just spotted a scouting party. Hold them off, no matter what. Don't let them catch sight of China. Copy that, boss. क्या टू 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 करे जा रहा है मेरा कंप्यूटर दिमाग खराब। चार्जिंग पे लगा ना फोन में। क्या सच बोल रहा होगा, सबको पढ़ तो लिया था। क्या था a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अरे बेंच मेरे को याद था भाई। मैं तो भाई मैं तो बताऊंगा नहीं भाई। मैथ की में से पूछो तुम लोगों को, मैंने उस दिन भी बताया था। मैथ मेरे को पसंद नहीं है भाई। मैथ में बहुत महान था मैं, क्या ही बोलूँ। इसलिए इंजीनियरिंग टाइम पे भी भाई मैंने आईटी ली पर ना, जब तो कर लिया मैथ कैसे करा मैंने, ठीक है। अब मेरे को याद भी नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहता मैथ की कुछ चीज़ याद है। अपनी आईटी की पढ़ाई आईटी की पढ़ाई करी मैंने, अपनी आईटी की पढ़ाई की जरूरत थी मेरे को। मेरे से मत पूछना भाई, मैं तो रखता नहीं पता भाई मेरे को। अबे ये सब थोड़ी क्वेश्चन पूछने होते हैं भाई। मेरे से ये सब मत पूछो। वर्मा भाई कह रहे हैं, अंश भाई कह रहे बोलो, कह रहे पढ़ाई के क्वेश्चन नहीं करने हैं। वही तो पढ़ाई के क्वेश्चन थोड़ी करने होते सच के सामने में। अंश भाई कह रहे ओके, मैं पहले ही बता रही हूँ मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में शुरुआत से। हाँ भाई मेरे को भी नहीं है भाई। वर्मा से पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन करने हैं जैसे कभी नाक में उंगली करी है स्कूल में। हाँ ऐसे क्वेश्चन करने हैं उल्टे सीधे, इन वाले क्वेश्चन बेंच क्रिंज वाले। क्या वर्मा भाई कह रहे मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अच्छा ये तो गाना बन गया भाई, मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना। जाना तेरी यादें मुझे सोने नहीं देती, बिस्तर पे सोते क्या बिस्तर पे पड़े पड़े हो जाता है सवेरा। मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना। आगे पता नहीं क्या होता है बेंचो। ये गाने ने इतना दिमाग ख़राब करा था, इंस्टा पे ट्रेंड हुआ था 2021-22 में, पता नहीं कब, याद नहीं आ रहा मेरे को। जो इतनी रीलें बनी थी इस पर, मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना, दिमाग खराब। अबे जो भी क्वेश्चन कर रहे हो मेरे से भी पूछ लेना भाई, हम लोग आपस में खेलते रहो भाई। बहन चोद ले बोल देंगे ये तू ही ले साला, गोली चलाएगा सर, गोल मर लेना, मर क्यों नहीं रहा है साला, मरता नहीं है कभी कभी। ये ले साला कितनी गोली मार रहा हूँ जब मर रहा है बहन छोड़ेगा। कोई तो एक गोली में मर जाएगा, कोई एक गोली में भी नहीं मरेगा।
क्या क्वेश्चन आया भाई? पहले मैं पूछता हूँ। ओके पूछो भाई। कभी मुठ मारने की कोशिश की है? पूछो BMG भाई। अच्छा मेरे से पूछ रहे तुम लोग? मुठ मार नहीं भाई नहीं। Sir, they spotted us. Hide the explosives and get out of there. Quick. This is your only chance. I've got a backup plan. Oh fuck. ऐसे गंदे काम नहीं करते हम। क्या अंश ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो कि सबके लिए हो? मैं गर्ल हूँ, मैं कैसे जवाब दूँ इस सवाल का? सही बात है। अरे आपने तो बोला BMG भाई से पूछो। अरे यार अंश भाई एक काम करो, मेरे भाई एक ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो कि सब जवाब दे सके, ठीक है? या फिर तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब से अलग अलग क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जेंडर के अकॉर्डिंग। अंश ब्रो आपकी मर्जी। एक ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कि सब जवाब दे पाए, या फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछो। Boss, we've cleared the garage. Heading north now. What about ammo? Running low. Almost out of the grenades we took from the ward. Damn it, cleric. Too soon. I know. These assholes are fucking hard to take down. Should have packed a flamethrower. I'm sending another squad to you. We're moving to the Duka. Let's get this done. अरे भाई अरे बहन जो क्या तुम्हारा झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। पकड़ा गया मेरा झूठ। बहुत बार। अब नहीं करता भाई, अब टाइम नहीं मिलता है इसको करने का। समझ गए ना? जवाब मिल गया ना अंश भाई? बोल दिया था, ठीक है? तुम लोग पहले पूछो। अच्छा मैं पूछती हूँ, कभी चोक खाया है स्कूल में? Come to me. नहीं मैंने तो नहीं खाया भाई। मैंने तो नहीं खाया भाई चोक कभी, ना मन करा। पता नहीं कैसे खा लेते लोग। ओए 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 टावर गिर रहा है। ओ भाई भाई खतरनाक हो रही है भाई गेम पता ही। यार लोंडो बड़ा थोड़ा हल्का सा लग रहा है। हमने एसेसिन के शैडोज खत्म कर दी, पर आदत पड़ गई थी उस गेम की ना। तो इतनी बड़ी गेम थी ना, इतनी स्ट्रीम्स करी हमने उस गेम की, तो आदत पड़ गई उस गेम की हमें। मैंने नहीं खाया भाई चोक, खाना भी नहीं है। पता नहीं कैसे खा लेते लोग, मुझे समझ नहीं आया आज तक। वर्मा भाई का है? हाँ वर्मा भाई ने खाया भाई, अंश भाई ने भी नहीं खाया चोक को भी। क्या मैंने भी नहीं खाया कभी। बस वर्मा भाई का आंसर है, वर्मा का आंसर है हाँ। वही तो वर्मा ने हाँ करा है बस। कैसा टेस्ट होता है? बेकार होता है। लड़की ने खिलाया था एक बार, एक लड़की ने खिलाया था। वाह भाई वाह।
वर्मा भाई चौक ही खिलाया था ना, और कुछ तो नहीं खिलाया था, लेकिन चौक की बात हो रही है, चौक की, और किसी गंदी चीज की बात नहीं हो रही है वर्मा भाई। वर्मा भाई को और कुछ खिलाया था लड़की ने, वर्मा भाई चौक समझ रहे हैं। वर्मा भाई चौक सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का। हमारे चौक की बात नहीं हो रही है। अरे बात तो लड़की ले आते हैं वर्मा, वही तो। अरे बाद में बीच में लड़की आ जाती है वर्मा भाई से। अरे बहन चो, ये साला टोना टोटका वाला भोसड़ी वाला फिर मिल गया मैं। भाई बंदा क्या लक्ष्य शक्तियां लेके आ रखा है साला। आंखें तो देखना उसके ऊपर, साले की आंखें ही सफेद है। The fight is over. ओ कह रहा फाइट खत्म हो गई है। A mortal dies, yet the soul endures. Welcome to the subtle world. subtle world? कौन सी दुनिया में स्वागत कर रहा है? तो कहाँ आ गए? Skiff. We have a lot to talk about. कह रहा है बैट स्कीफ, बहुत कुछ बातें करनी है। और लोंडो ये टोने टोटके वाले के साथ बैठेंगे भाई, हम करते इसके बातें इससे। What time of day would you choose for an intimate conversation? अब तो नॉर्मल हो गया भोसड़ी का। इसको क्या हो जाता है वैसे बीच में? क्या करें, डस्ट करते हैं। क्या डस्ट कर देगा? What a fascinating show. Much of the zone is not what it seems. लोंडो जैसा हमने मौसम बोला इसने वैसा कर दिया। Did you unleash upon us? भाई टोने टोटके वाला बाबा है भाई ये। इसके हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल है। Envoy of the monolith. What? You stood by his side, carrying out his will, and now you've come for me. I have angered him, and that is why you are here, seeking revenge and a reward. I don't get it. I just want to reclaim what I've lost. That makes two of us. Is that so? Some come to the zone to make money. Others come looking for miracles. Many just want to find happiness. You know? A way to feel real and alive again. But have you ever met anyone who was truly happy? And what do they look for if the miracles don't satisfy them? The monolith brought joy to a chosen few. जादूगर इस दुनिया का। But हाँ I've अंश भाई decided that जादूगर है all भाई। stalkers in the zone deserve better. How generous of you. I've been here before. Once. A long time ago. When I was a stalker. Looking for an adventure. I took just one awkward step. And my whole world plunged into darkness. But in the end, it was I who gained true sight, while the others kept stumbling around in the dark,
searching for invisible wonders. The monolith showed me the zone for what it truly is. ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है भैंसचोद? वे कहाँ गायब हो गया? भैंसचोद, अभी तो गेम की एंडिंग भी नहीं हुई है, अभी कहाँ से गायब हो गए एकदम से? ओ भाई लोंडो भाई, क्या है भाई? नॉर्मल गेम नहीं है भैंसचोद। क्या क्या चूज करो? ये चूज करता हूँ। Is this the real zone? ये भाई क्या रियल जोन है? The zone is what ये you consider it रियल to लाइफ be. है। I've shown you how I see it. Walk your own path, and you will come to see the zone in your own way. Such is the will of the monolith. अरे हैं Still alive out there? I'm alive. That's the kind of news I like to hear. And what about Faust? Is he in the still alive category as well? No. I like that kind of news even better. Believe it or not, I'm a little sorry he's gone. Let's dance! Here's a little present for you! Even better. Believe it or not, I'm a little sorry he's gone. He was a true believer, that's rare. But enough poetry. Search his body. He's got to have something on him that can help us. You'll know it when you see it. Meet me at Malachite. क्या दूसरा कुछ भी दिया था, बता नहीं सकता हूँ। पलक है। अरे डोंट वरी, बताओ बताओ, बस वर्ड्स अच्छे यूज करना। ज्यादा डार्क है वो। हाँ वर्मा भाई, डार्क है ज्यादा। जादूगर है रहने दो, क्योंकि आपने कहा था सुधर जाओ वर्मा, इसलिए मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है फिर तो। अरे अरे वर्मा भाई सुधर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? मेरे को यकीन नहीं होता वर्मा सुधर रहा है। वही तो, सुधर रहा है। हो ही नहीं सकता। अंश भाई भी कह रहे हैं। वर्मा भाई कह रहे हैं नहीं भाई, पलक ने कहा है तो सुधरूंगा मैं। अच्छा भाई कह रहे मुझे पता था नहीं सुधरेगा। चलो किसी की तो बात मान रहा है वर्मा। ओ भाई। They're scattering. We're pushing them north. What about Faust? Dead. What about S.T.A.L.K.E.R? He did it. He blew up the Duga, but he didn't make it. We've lost so many. It doesn't matter. Let's not waste our time mourning. S.T.A.R wouldn't want that. He believed in his cause and was willing to do. जीने के 4 दिन। बाकी है बेकार दिन, जाए 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 जाए।
एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, ये जवानी फिर ना आए। Digging in here or not? Make up your mind. What if Faust doesn't have it? What if... Are you even tuning in? Honestly, not really. Whether we dig in or not, everything's going to change very soon. Do you get it? Oh, you will. Why the fuck did I have to join up? Skiff! At last! Did you find it? Possibly. What is it? It's the key to something incredibly important. Something that's going to change us all. And it's all thanks to you and me. Come, the time of miracles is nigh. What miracles? Terrifying ones, astonishing ones, and above all, real ones. Those are the only kinds of miracles we have here in the zone. All right. What do I have to do? Place the key on the controls over there and hold your breath. Come on, use the key already. Greetings, Skiff. I know you have a lot of questions for me. Ask them, and then we'll decide what to do with you. How do you know me? We're aware of everything that happens in the zone, but we're not always capable of influencing it. After S.T.A.L.K.E.R tried to replicate the Caribbean experiment, some of their anomalous energy seeped into the mainland. It affected a number of people, but you were the only one who sought the truth. Who are you? Or what are you? We are C consciousness. We were once 7 scientists, 7 distinct personalities. Now, we exist as one mind. By merging our consciousnesses, we've achieved a direct connection with the noosphere. I am the representative of C consciousness. Since you survived, does that mean the noosphere is an extension of life? The noosphere is much more than just the Earth's information field. Thanks to the zone, sentient beings can achieve eternal life in the form of subtle matter, pure consciousness, free from the constraints and limitations of a physical body. However, should anyone attempt to harness the anomalous energy, it will inevitably result in the annihilation of all subtle matter. Everyone in the zone thinks S.T.A.L.K.E.R killed you all. How did you manage to survive? When S.T.A.L.K.E.R went to Lab X7 with the intent of destroying our pods, we were certain that the end was near. As it turned out, even after our physical demise, our existence persisted within the noosphere. Regardless of S.T.A.L.K.E.'s intentions, any efforts to revive us would have been futile because the merging of our minds is irreversible. What are you trying to achieve? After the reckless intervention by S.T.A.L.K.E.R, the structure of the noosphere was damaged, isolating individual subtle matter images from one another. The Shining
will reinstate the right to immortality for all sentient beings in the zone, and eventually, for all of mankind. From then on, our liberated consciousnesses will gain the ability to communicate directly with one another, facilitating the free exchange of knowledge and experience. It will be the dawn of a new age. So this is what the Shining Zone really is. I knew it in my heart. I believed in it all along. Seek and ye shall find. The Shining can rid us of the darkness that's holding us back, preventing us from hearing each other. It will grant us eternal life. No pain, no regret, no suffering. How can we make this new age come sooner? Scar, the word is at the gates. It's just a matter of time before they break through. Of course. Fuck! Take care of them and fast! Remember, I don't work for you. You're working with me. Over and out. Skip, I need you to help distract the ward while I get the professor out. I'll meet you outside. I can't get the professor out of here while you're still hanging around. You have to distract the ward. भाई रिकवर भी कर ली हेल्थ। देखते हॉर्न बजता रहता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया जैसे। मर लो सालो मर लो। Near the railroad tunnel to Skip. You know this?
ले चाचे मर ले। भाई सालों के सर पे मार तो मरती क्यों नहीं है? Take this! Enemy is close. Keep looking. मर ले चाचा मर ले।
क्या बकचोदी चल रही है भाई तुम लोगों की। एक तो ये हॉर्न बजे आ रहा है ना हेडफोन, बेंचो दिमाग खराब हो रहा है गेम में। तुम लोगों को तो पता नहीं इतनी तेज सुनाई नहीं दे रहा होगा वैसे। Skiff, there's no denying I was right now, is there? What you witnessed was truly a miracle. Sure, it was pretty impressive, but I'm having a hard time believing it all. That's because we were so rudely interrupted. Faith always begins with doubt. देखते हैं कब तक सुधरने की एक्टिंग करता है। मेरे सामने एक्टिंग करेगा बस ये वर्मा। सही बात है, सिर्फ आपके सामने रूप नहीं ला रहा वर्मा भाई। हम लोगों को पता है अंश भाई और मेरे को वर्मा भाई कैसे है। सही बात है, अंश भाई मैं अच्छा लड़का हूँ। आज दुनिया का सबसे क्यूट वर्मा भाई कह मैं अच्छा लड़का हूँ दुनिया में। हाँ बहुत अच्छा लड़के हो। अंश भाई भी सही मजे ले रहे हैं, वो तो पता है मेरे को। लो भाई पलक को भी पता है। देखा मैं तुम लोग कहता हूँ लड़कियों को पहचान होती है। देखा पलक को पता है मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। सुल्तान डेर कहाँ गया, कोई नहीं खेलेगा। अरे खेलो भाई तुम लोगों ने बंद कर दिया खेलना, इसलिए मैं चैट ही नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा तुम लोग अपनी बातें कर रहे हो। अरे वर्मा आप मेरे भाई हो, राखी बांध दूंगी आपको। ले मजा आ गया। अरे वर्मा भाई पता नहीं था यार तुम भाई हो यार। चलो यार पलक को कोई भाई मिल गया, चलो भाई है ना वर्मा भाई। वर्मा भाई पार्टी कब दे रहे हो, भाई बन गए भाई तुम। दोबारा से He's the only one from S.T.A.L.K.E.R's group Thanks, Verma bhai, bhai banne ke liye. whereabouts are a total mystery. He's a legend in his own right. He materializes out of thin air, heals everyone he encounters, even mutants. अंश भाई भी कह रहे लो वर्मा भाई राखी बंधवा लो। अरे पलक कुछ भी बोल देती है, बट ये क्या बोला? I have no idea, but he's often sighted in the Red Forest. पलक कुछ भी बोल देती, बट ये क्यों बोला? अच्छा तो भाई रो रहे हैं, अब बोल दिया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अंश भाई बचा लो मेरे को भाई बनने से। अब तो बन गए भाई, अब इसी बात पर सच का सामना खेलते हैं। वर्मा भाई और एक बहन बना लो। ले भाई हाँ खेलते हैं। बन गया भाई अब मैं। अब भाई देख लिया अंश भाई तुमको। एमजी भाई भी चुप है। अरे बेंच मेरे को तो पता ही नहीं था। सही याद दिलाया, कुणाल को तो बताना चाहिए कि मेरा एक भाई बन गया है। कंग्रेचुलेशन ब्रो, खुशी हुई मेरे को ये बात जानकर। चलो भाई अब राखी बांधने वाला मिल गया है। गेम स्टार्ट करो यार। वर्मा भाई कह रहा हूँ गेम स्टार्ट करो। ओ भाई दिल दुखा है तो दिल टूटा तो नहीं वर्मा भाई। अपने बीएमजी भाई को बोलो जीएफ बनवाएंगे। ये क्या वेंचर, अपनी तो बंदी बनवा नहीं पा रहे हैं, मेरी बंदी बनवाएंगे। बड़ा अच्छा वर्मा भाई मजाक उड़ा रहे, बेइज्जती कर रहे हो। फैक्ट्री खोल रखी, बंदी नहीं बनवाना था ऐसे बोलोगे। फैक्ट्री खोल रखी है ना बंदी की बीएमजी भाई ने। सही बोला अंश भाई ने, बट बेचारा खुद सिंगल है। कुणाल Tell me where to find them. आपको बड़ी चिंता है बीएमजी भाई सिंगल है तो। बीएमजी भाई सिंगल है तो अंश भाई कह रहे सिंगल में तो मजा है। फिर ये बोल रहे हैं वर्मा भाई कह रहे बीएमजी भाई को पसंद करती है। अलग तो अलग बोल दो, अलग बीएमजी भाई को आई लव यू। बाकी हम हाँ क्या बाकी हम कह देंगे बीएमजी भाई को कि हाँ बोल दो पलक को। ओह वर्मा भाई क्या बिचौलिया बन रहे हो क्या? बिचौलिया बन रहे हो क्या? पंडित है। अरे अच्छा वर्मा भाई का साइड बिजनेस है शादी वादी करवाना, रिश्ते तय करवाना। अच्छा पंडित है वर्मा भाई। अरे उसका जवाब ना होगा क्योंकि वर्मा तुम्हारे तरह सिंप नहीं है। कुणाल ले करवा ली वर्मा भाई बेइज्जती दोबारा से। सही बकचोदी हो रही है भाई तुम लोगों की। मैं गेम पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ ना ये वाली गेम में।
अंश भाई सवाल पूछो। अब तुम लोग के लाइव चैट नहीं हो रहे, जब मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ एकदम से धड़ा लाइव चैट हो जाते हैं। तुम पूछो वर्मा भाई। अच्छा तुम पूछो वर्मा भाई, तुम पूछो भाई। Dead folks don't give a fuck where they rest. But I do. I mean, who could do this to a human being? I know who. It's those mercenaries. They were looking for the doctor, and they found Gray instead. Bullshit. Mercs wouldn't do something like this. People ain't mutants. They're capable of anything. Now hush. I've got to figure out what mold Gray like that. Maybe then we can hunt the fuckers down. Sorry, Lona. Not a good time. We're not open for business right now. So why don't you get the fuck out of here? And shut the door on your way out. We're not open for business. But we can chat. Keep it short. You can see what's going on here. मैं क्या पूछूं, मैं तो कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। अरे वर्मा भाई कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे। वर्मा भाई तो भाई टूट गए। भैया मैं तो टूट गया। बीएमजी भाई पूछेंगे सवाल। अंश भाई कह रहे पूछो। अच्छा पूछता हूँ रोटा भाई, पूछता हूँ। कभी क्लास में बचपन से लेके आज तक कोई भी क्लास में किसी बच्चे ने तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे ने टट्टी करी है? छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो। छोटी क्लासों में तो होता था लोगों, करिए कभी किसी बच्चे ने टट्टी और बताया ना हो, फिर सब बच्चों को बदबू आई हो और फिर सबको पता चला हो, टीचर को पता चला हो। एक बच्चे ने बताया सर विवेक ने तो हक दिया सर। फिर तुम लोगों को पता चला हो कि तुम्हारा साथ में जो बैठा है उसने हक रखा है, जब वही बदबू आ रही है इतनी। हुआ ऐसा अभी किसी बच्चे ने हक रखा हो क्लास में? अंश भाई कह रहे हैं हाँ, देखा हुआ है। Are these mercs looking for the doctor too? They swung by the other day. बताना अंश भाई जरा विस्तार में, कौन था तुम्हारा दोस्त? था क्या तुम्हारे साथ में बैठा हुआ था या दूर बैठा हुआ था? अगर साथ में बैठा हुआ तो लोड़े लगे होंगे तुम्हारे। I'd have shut my fucking trap, as Hornet would say. Tell me more about the doctor. Want me to do a little dance for you while I'm at it? Everybody's got questions about him. First the mercs, now the loners. It can get much worse. The doctor is a legend around here. Nobody really knows where he's holed up. But if you're injured, he'll track you down and lend a hand. Well, at least he used to. I'm telling you, it was the doctor. We've been hunting his pets. That's why he came after us. अंश भाई बताना थोड़ा डिटेल में क्या, मतलब कि बच्चा वो दूर था या तुम्हारे साथ में बैठा हुआ बच्चा? वर्मा भाई कुछ कह रहे हैं, मैंने तो खुद हक रखा है। वर्मा भाई कैसे शौक से बता रहे, मैंने तो खुद हक रखा है। भाई बड़ी प्राउड वाली फीलिंग है भाई, क्लास में हक रहा है वर्मा भाई कैसे शौक में बता रहे। छोड़ भाई मैंने तो खुद हक रखा है। अबे भाई बड़ा अच्छा काम करा भाई, ये बात है। अच्छा सच का सामने ना सच बोल रहा है वर्मा भाई, रूल फॉलो कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। नाइस वर्मा भाई, चलो कुछ तो फॉलो कर रहे हो। थर्ड क्लास में हगा था। अच्छा और अपनी जिंदगी में भी हग रखा है? अपनी जिंदगी में तो भाई हग ही रखा है वर्मा भाई तुमने। Well, find them. Or they'll find us first. Just like Gray. So you've seen the doctor? Just like I see right now. Except I had a hole in my gut, so the memory's a little hazy. I saw a shadowy figure and then I woke up in the clearing. My wound was all cleaned and patched up. And my radio was even charged. The guy said I was missing for a week. So don't pay attention to Hornet. The doctor never hurt anyone. He's all about helping folks. So where should I start looking for him? Gray was gonna stake out a place where the doctor was spotted before. It was a while ago, but I don't have any other leads. If it was those mercs, maybe they left something behind. क्या दोस्त नाराज हो जाएगा? अच्छा दोस्त ने हगा था? अंश भाई के अरे तो बता दो भाई, नाम मत लेना ना। अच्छा बस बता देना, दोस्त नाराज हो जाएगा। मतलब दोस्त ने हगा था, ठीक है। मेरी एक दोस्त ने पोटी करी थी, मेरे साइड में बैठी हुई थी, फर्स्ट क्लास की बात है। बहन जो साइड में बैठी हुई थी, साइड वाली ने
something's fishy. अबे You भाई go after them. मतलब कभी ना कभी You might किसी ना not किसी make ने it तो back हगा है up. भाई क्लास में है पर हम भाई ने खुद ही हक दिया वो Thanks for the लगवाता है जो बच्चों ने बचपन में हगाया ना स्कूल में बैठ के क्लास में बैठ के वो बड़े होके इंस्टाग्राम पे हग रहे हैं अपनी जिंदगी में हग रहे हैं If it wasn't there, be even more careful. ओ Better भाई yet, get out of here while you still can. Before it gets worse. I already told you everything, Stalker. You've got the coordinates for the clearing on your PDA. Now let me concentrate. 5 years in the zone. And I never had to bury a single soul. Can you believe it? Must have been one lucky guy. Now I guess my luck's run dry. ए लिखी हो रहा है What kind of job was Gray doing out there? Bunch of freedom guys set up a That's secret safe. stash in a cave. सही कहा Well, not that कुणाल secret वो really, मेरी but no दोस्त one here wants इंस्टा to पे mess with हफ्ती है McCluke. कंटेंट के नाम पर But देगा the mutants don't give a damn about McCluke and his crew. One of those freaks took over the cave, and Freedom lost their stash. They won't risk going in themselves, so they hired us. But I swear, I ain't setting foot in that forest ever again. Not even if all of Freedom goes bankrupt. I could do it. I'm not gonna try to talk you out of it. I just hope it goes better for you than it did for Gray. कहाँ टू में जा रहा है यार Heard something. Archie? Can you hear me? Archie! It's Gray! Fucking anomaly! Tundra got shot! We just set up shop right where the doctor was spotted. I figured if we saw him, we'd hand him over to the mercs. Now Tundra's guts are hanging out! I couldn't even see where the shot came from! Could have been anywhere! Tundra has a dead man walking! You gotta tell! Breathe! Don't!
बताता हूँ, बताओ अंश भाई, बताओ अंश ब्रदर। स्कूल पे तो टट्टी लगी था, तो गाड़ी से आते जाते थे। स्कूल पे तो टट्टी लगी थी, तो गाड़ी से आते जाते थे, तो मेरे दोस्त को लग गई थी, टट्टी लगी थी। स्कूल पे तो टट्टी लगी, क्या बोल रहे थे? तो स्कूल पे टट्टी लगी थी, तो आने टाइम गेम में कर दिया, गाड़ी रोकी और उसका भाई धोना लेकर गया था। क्या आते टाइम गाड़ी में कर दिया था? अच्छा, टट्टी कर दी थी। अच्छा, स्कूल जब तुम अंश भाई जब तुम स्कूल जाते थे तो तुम्हारे दोस्त ने, तुम लोग गाड़ी से स्कूल आना जाना करते थे, ठीक है, समझ गया मैं। जो आते टाइम क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त ने टट्टी कर दी गाड़ी में, ठीक है, समझ गया। तो उसके टट्टी लगी हुई थी उसकी गाड़ी में, ठीक है, तो आते टाइम कर दी, तो गाड़ी रोकी और उसका भाई धोने लेकर गया था उसको। वाह भाई वाह, नर्सरी की बात थी। अच्छा चलो, नर्सरी में तो समझ में आता है कि नर्सरी में बच्चे हक देते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता इनके माँ बाप बच्चों को क्या खिला के भेजते हैं जो हक देते हैं बच्चे। बच्चों को कंट्रोल करनी नहीं आती टट्टी, बता जरा। अंश भाई ने पूरा विस्तार में बता दिया भाई। I saw them near the village. भाई कह रहे बहुत दूर था स्कूल। अच्छा, अब मैं बताऊं अपनी फ्रेंड की। हाँ भाई बताओ बताओ। अच्छा वर्मा भाई बता रहे हैं अब। मैं तो आलू के पराठे खाकर गया था स्कूल, इसलिए मैंने हक दिया था और किसी को नहीं बताया था। वाह भाई वाह भाई, ये वर्मा भाई वही बच्चे होते हैं जो स्कूल में हक देते और किसी को नहीं बताते, फिर बदबू आती तो पता चलता है। नहीं, आगे भी लिखा है, और स्कूल से घर आ गया, फिर घर पे टॉयलेट में जाकर देखा तो टट्टी पूरी मेरी गांड में और पैरों में लगी हुई थी। ओ भाई वर्मा भाई कमाल है भाई। इतना सेवेज, इतना खतरनाक कैसे बचे आप भाई? किसी को बदबू नहीं है क्या क्लास में? मेरे को घिन आ गई यार। घर आया तो टॉयलेट में जाकर देखा तो टट्टी पूरी मेरी गाने में और पैरों में लगी थी, पैरों में भी लगी हुई थी यार। यार छी। यार भाई वर्मा भाई क्या हो गया भाई? क्या यार, मुझे तो हैरानी आ रही, क्लास में किसी को पता नहीं चला।
देख Stalker, what are you doing सी here? वर्मा आए हाय सच में यार गाड़ में और पैरों में भी लगी हुई थी चल गाड़ में तो टट्टी लगी होगी पैरों में भी लगी हुई थी छी यार और भाई तुम स्कूल से घर भी आ गए ऐसी हालत में अरे भाई वर्मा भाई अंश भाई जवाब नहीं दे रहे लग रहा अंश भाई उल्टी करने चले गए अरे भाई With all these anomalies and radiation around, but he just plowed right through, you know? क्रिंज भाई यार Off the charts. भाई मैं हंसता रहूंगा यार रात भर ये बात सोच कर छी यार मेरे को इमेजिनेशन भी हो गई What's with the radio? That's our signal. When it's blasting at full volume, it means trouble. Make a run for it and don't look back. What if someone follows the sound back here? Bring 'em on. I'm as good as gone already, as you can see. At least I can give the guys a fighting chance. Who are you working for? I have no idea. Nobody's ever seen the guy, and his jobs always turn out bad. He sent my pal to Wild Island after S.T.A.L.K.E.R went kaboom. Never heard from him again. We should never have taken this job. Bad call. Who is he? क्या क्लास में बदबू आई और सबको अच्छा क्लास में बदबू आई सबको बट किसी को पता लगने नहीं दिया कि मैंने हगाया वाह बेंचो वाह मुझे तो आ रही है किसी को पता नहीं लगने दिया भाई ऐसा क्या करा भाई तुमने किसी को पता नहीं लगने दिया हमारे स्कूल में तो कोई बच्चा हक देता तो बेंचो सबसे पहले पता चलता था कि किसने हगाया भाई पता चल जाता था हकते ही किसने हगाया और मैं तो क्लास का मॉनिटर होता था भाई बचपन में तो बेंचो टीचर मेरे को ड्यूटी देता था कि पता लगा कुरान चल किसने हगाया बेंचो मैं कहा ये क्या ड्यूटी देती है बेंचो मैं पता लगाऊं किसने हगाया मैं क्या सबकी गांड उठा के देखूं भाई मैं फिर सबके पास जा जा के सूंघता था बेंचो कितने हगाया यार अंश भाई उल्टी करने चले गए भाई अरे भाई ये स्टोरी में लगाऊंगा मैं एक्स्ट्रा की ओ भाई खतरनाक भाई खतरनाक वर्मा भाई ओ भाई यार क्या मेरा स्कूल घर के पास था करके पास में था तो आधी टट्टी तो रास्ते में गिर गई थी आते आते आए यार भाई भाई बोलने वाले डर जाएंगे बोलने वाले कहेंगे पागल हो गए बोलने वाले सोचते पबजी खेलता मैं पबजी खेल के पागल हो गया मैं अबे यार स्कूल से घर आते टट्टी आदि तो रास्ते में गिर गई छी Get down!
टॉपिक चेंज करते हैं। कुणाल वर्मा ने हगने में अवार्ड जीत लिया। वही तो लगता है अंश उल्टी करने चले गए वर्मा की बात सुनकर। अद्दा भाई ओ भाई। I'm here. I need help. He didn't kill them by choice. The monolith guided him to hunt me with live bait. And I won't let you finish him. Enough deaths. So, it was him who killed the mercenaries and hunters. They were bait. A way to catch my attention. But you hadn't helped them. How many lives can a dead doctor save? Sometimes you need to make small sacrifices so you can save more lives later. Is he going to make it? I've treated worse injuries. Even on monolithians. Especially on monolithians. He spilled a lot of blood to get here. His own, and other people's. And so did you, I imagine. I'm aware of what he's done, but he's injured and needs help. That's all that matters to me. So, this is what the real doctor looks like. Do you know him? This monolithian? Strider. His name's Strider. That's a good name. An honest name. You were looking for the doctor. Well, you found him. अंश भाई पूछ रहे कौन सी क्लास में हो तुम सब? अरे अंश भाई कोई भी स्कूल में नहीं है भाई। वर्मा भाई और तुम ही हो स्कूल में। I know you two have some history. I doubt S.T.A.L.K.E.R's figured out how to bring the dead back to life. दूसरा काउंट बनाया है। So it's up to us to help Strider. Everything else can wait. You think there's still a chance to help him? In a way, ये क्यों पूछ रहे हो कौन सी क्लास में हो तुम सब? हमें कोई भी स्कूल में नहीं है भाई। क्या हो गया अंश भाई ऐसी अनजानों वाली बातें क्यों कर रहे हो? क्या पलक बता रही है क्या? अब टॉपिक चेंज करते कुणाल वर्मा ने हक दिया, हाँ ये पढ़ लिया था। लगता है अंश उल्टी करने चला गया वर्मा की बात सुनकर। वही तो। अच्छा अंश भाई अकाउंट बनाने गए थे। अकाउंट बनाने क्यों गए थे वे? I'd ask you to spare the wounded and keep them alive. But it's your call, Stalker. A regenerator.
What's that? A creation of sea consciousness. It helps the Monolithians to heal even the most grievous injuries and get radiation out of their bodies faster. Unfortunately, it only works on those who lack resistance to external control after being completely stripped of sea immunity. Trading one's freedom for the chance to wander through the CNPP during an emission is a devil's bargain. But no one asked their opinion on the matter. I've heard that you treat both humans and mutants. Why? Because none of them are responsible for what's going on here. Not the Stalkers, not the mutants, not even the Monolithians. And also because everyone has to pay their dues someday. Why are you so concerned about his life? जो मेरा Because अकाउंट it's था the पापा के only मोबाइल से thing आपकी we कमेंट देखती truly है मेरी बहन possess. No matter how bad. इतनी बड़ी बहन है भाई अंश भाई आपकी Now go. Don't waste any more time. बेटा तू तो गया वाचिंग यू फ्रॉम एवरीवेयर क्या चल रहा भाई ये अंश भाई का क्या मैटर स्टार्ट हो गया अलग मैसेज नहीं दिख रहा है यार पहले वाला कुछ करा था क्या क्या मेरा भाई यहाँ आकर ऐसी घटिया बातें करता है
भाई क्या हो गया अंश भाई के साथ? मैं तो गेम खेलने में लग रहा था बंचो, तुम लोग बकचोदी कर रहे थे लाइट साइड में, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। अब बेटा कर ले डिलीट कमेंट, कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम पहले से बोल दिया है और सबने रीड भी कर लिया है। कमेंट डिलीट हो रहे हैं वहाँ पे, अंश भाई बोल रहे क्या चक्कर चल रहा है भाई? और मैं भाई कह रहे हैं अंश भाई के लोड़े लग गए। जब भी मेरा भाई आए तो रिमूव कर देना। यार मैं ऐसे किसी को रिमूव भी नहीं कर सकता ना। मैं गेम खेलने में लगा हूँ, मैं कैसे रिमूव कर दूँ? फैमिली मैटर है यार तुम लोगों का, तुम लोग सॉल्व करो, मैं क्यों रिमूव करूँ यार किसी को? उसका बोर्ड्स का टाइम है, सो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इज फ्यूचर टू मोर इम्पोर्टेंट देन लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा। भाई समझता हूँ मैं तो कहता हूँ यार पढ़ाई पे ध्यान दिया करो भाई। मेरी स्ट्रीम नहीं तो और किसी की स्ट्रीम देख लेगा, मेरे रिमूव करने से क्या हो जाएगा? और किसी की स्ट्रीम नहीं देखेगा, और भी तो यूट्यूबर से जो स्ट्रीम करते हैं। Skirmish at the boundary, casualties among the brothers. The wounded will be delivered in time. Copy that. यार मच्छर कैसे लग रहे हैं बेंच? आई नो जहाँ जहाँ जाए देखेगा हम उसके पीछे पीछे आएंगे, नो मैटर वॉट, एंड उसको वहाँ से भी रिमूव करवाएंगे। अरे भाई मैं तो यहाँ पे लाइव चैट देख पा रहा हूँ, अब की कोई मिलियन वाला यूट्यूबर है उसकी तो 7,000 8,000 1 लाख वॉचिंग आ रही है, ठीक है। कैरी नाटी जैसे है, उस कैरी नाटी की तो कितनी 80-70 हज़ार वॉचिंग आ जाती है आराम से, ठीक है। अब उसकी लाइव चैट में क्या बोलोगे तुम? वो तो उसको तो किसी किसी की लाइव चैट दिख पाती है बेचारे को, उसको कैसे रिमूव कराओगे यार? ये तो वही बात हो गई, टीचर को बोल रहे हो कि बच्चे को पढ़ाओ।
आगे अंश भाई मेरे को लगते समझदार है भाई, मेरे को इतना पता है समझदार है वो तो आज लेट हो गया इसलिए नहीं गए, नहीं तो वैसे चले जाते वो। बाकी फैमिली के ऊपर होता है, फैमिली का कंट्रोल होना चाहिए बच्चे पे। बाढ़ में जाए तो इसको अगर अपना फ्यूचर बर्बाद करना है तो करे, तो आई एम डन विद दिस गाय। कुछ भी बच्चा है वो, कुछ भी बच्चा है वो, कुछ भी बच्चा है वो यार। 10th क्लास में यार समझदार हो जाता है हर कोई यार। बाकी बातें तो अच्छी करते हैं भाई, कोई समझ नहीं है। तुम लोग बड़े हो गए उससे लिए बड़ी सी सच्चाई, क्या कोई समझ नहीं है। तुम लोग बड़े हो गए उससे, बड़े हो गए उससे, इसलिए इसी स्टाइल किड। मेरी एज कितनी है? If you have 20 है। faith, it will succeed. And if your faith isn't strong enough, I will help you find redemption for that sin. ये BTS वाली है। अरे अंश भाई क्यों बहसबाजी कर रहे हो यार, मैटर क्यों बढ़ा रहे हो अंश भाई? सोने जाएगा कि नहीं? अरे अंश भाई बात मान जाओ यार, सोने चले जाओ यार, क्यों मैटर बढ़ा रहे हो फालतू में? मैं यहाँ पे मैटर सॉल्व करने में लग रहा हूँ अंश भाई, और तुम मैटर बढ़ाने में लग रहे हो। मान जाओ भाई फैमिली की बात, सो जाओ भाई। मैं भी स्ट्रीम बंद करने वाला हूँ भाई, मेरे को भी सोना है। मैं भी स्ट्रीम बंद कर दूंगा भाई। ऐसे बात नहीं मानोगे ना फिर फैमिली फोन वोन छीन लेगी, फिर कभी नहीं आ पाओगे भाई तुम स्ट्रीम में, समझे ना? उनकी बात मानो भाई थोड़ा। इसलिए तो बोला है वो भी बच्चा है। तो अंश भाई मैं बोल रहा हूँ सोने चले जाओ, ठीक है? अगर पेरेंट्स फैमिली तुम्हें अलाउ कर रही है फ़ोन चलाने के लिए तो तुम भी बात मानो, ठीक है? बुरा नहीं मानना है, ठीक है? ये मत सोचना कि BMG भाई पढ़ने के लिए कह रहे हैं, सोने के लिए कह रहे हैं। अगर फैमिली तुम्हारी बात मान रही है, फैमिली तुम्हें एंजॉय करने दे रही है तो तुम भी बात मानो, ठीक है? इक्वालिटी अंश भाई, इक्वालिटी, ठीक है? हैरान मत करो यार फैमिली को, फिर फैमिली गुस्से में आ जाएगी, फैमिली फिर कुछ नहीं करने देगी, तुम्हें पढ़ाई करने देगी फिर फैमिली। वो अच्छा लगेगा अंश भाई, फिर तुम गायब हो जाओगे, फिर आओगे नहीं कभी स्ट्रीम पे, वो अच्छा लगेगा। इससे अच्छा जैसा वो कह रहे हैं उनकी भी बात मानो, वो भी तुम्हारी बात मानेंगे, बस खुश। फालतू में क्यों गुस्सा दिलाना है फैमिली को? बोला तो यार 21 है। ये BTS वाली है। अगर आप अंश की सिस्टर बोल रही हो तो यार आप खुद स्ट्रीम क्यों देख रही हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अंश को नहीं चाहते कि अंश स्ट्रीम देखे तो आप भी मत देखो। इक्कीस कुछ भी, इसकी बात का जवाब मत, क्या काश वही समझ पाता, इसकी बात का जवाब मत देना। 21 कुछ भी क्यों? 21 का नहीं हूँ मैं, फिर कितने का?
अरे भाई मैं इधर हूँ अपने भाई के लिए हूँ। अरे भाई के लिए क्या हो? मैं कोई भी स्ट्रीम नहीं देखती। अच्छा BTS वाली स्ट्रीम देखती है। How long did you know each other? Not long. I met him on Wild Island, back when he was still human. He was someone who had everything taken away from him. His past, his ability to fight back, even his name. We go to great lengths seriously to cover up still a kid. our mistakes. Arrange भाई। What do you mean, Doctor? अरे यार गेम की क्या स्टोरी चल रही है? मैं चलो गेम की स्टोरी पे ध्यान दो। Scientists managed to tap into the noosphere, the Earth's informational field, an achievement comparable at best to the conquest of space. It was a turning point not just for science, but for the fates of the human race. However, as with all people, each of my colleagues was truly interested in only one person: himself. They began to dream of worldwide fame, of laurels crowning their bald, shiny heads. Naturally, the truth couldn't come out about secret laboratories, brutal experiments, and other such dubious undertakings. It was out of the question. And so, they all got carried away with their dream of a perfect world. You know how the saying goes, great minds think alike, though fools seldom differ. And lo and behold, what do we have decades later? The Zone, in our image, after our likeness. You were there. मेरी आवाज से सब बच्चा समझते हैं। You sound like 15-year-old kid। पता था मेरे को। My doubts इसमें नई बात क्या है? their confidence. And so when the experiments took place, one of the pods was left empty. The eighth one, or rather, the first, Dr. Kaimanov's pod. My pod. And so you've solved yet another mystery of the Zone, Stalker. Perhaps the most unsettling one. Dr. Kaimanov. Pleased to meet you. There was an eighth pod. The human brain is too frail to handle a direct connection to the noosphere on its own. In order for it to work, we required 8 participants in pods filled with a specific solution. I was supposed to be in one of those pods, but I just couldn't bring myself to do it. Valentine reproached me for my lack of courage. But given how things turned out, I was actually too daring. In the end,
What we got wasn't control over the noosphere, but rather the zone itself. The lesser of two evils, if you ask me. Thanks for your help. Whatever happened to life is the only thing we truly possess. Frankly, choosing between the two of you wasn't easy. Wasn't my first time, but it only gets harder over the years. But if you don't make the choice, someone else will make it for you. And it usually ends up being worse. I'm not fond of thinking for others or giving advice, but I get the feeling Strider would approve of the choice I made, however strange it might sound. अच्छी बात है भाई, चली गई भाई। भाई फैमिली मैटर है भाई, तुम अपना देखो भाई। लाइव स्ट्रीम पे क्यों वहां के बकचोदी कर रहे हो भाई? मेरी लाइव स्ट्रीम में गेम खेलनी होती है मेरे को, गेम समझनी होती है हम सबको। Back in 2012. I spoke to the representative through the Visiograph in Malachite. They still exist in some kind of form called subtle matter. Subtle matter? But that's impossible! That means it's still going on. Why did you refuse to get in the pod? Because I've always held on to my belief in humanity. My colleagues, on the other hand, advocated for fixing it through the noosphere, purging it of darkness. How could I consent to such a notion? How could I permit them to rob all of humanity, not just of its ability to act freely, but even to think independently? Everything dark and light about us is a result of our own choices. The zone was born in a place of tragedy and horrific experiments, but I believe in a different zone. A zone open to everyone. So, you were the one who created the zone? Me? No, certainly not. The zone created itself. I merely facilitated its emergence. Although my colleagues and I had different expectations for the outcome of our experiment. You see these blind dogs? I've been trying to tame them for years, but they were born in a lab where they've known nothing but pain and fear. But Tiger here found me on his own. He just came out of the woods one day and tried to steal a sausage. He was born free and had the freedom to make his own choices, you see. The zone is our collective offspring, but all we've imparted to it is suffering and sorrow. It doesn't know any other way. Maybe we're the same. A zone open to everyone? That sounds kind of dangerous. That's because it's the only way you see it. Frightened and caged, born amid evil and violence. What else could the zone have evolved into? In a place where both humans and nature are nothing more than test subjects. If it had been born into freedom, like Tiger, it might have evolved differently, into a zone of creation, rather than destruction. And then, we might have become different too. We always had the ability to overcome the circumstances. Access to the noosphere would have made us better, even if it meant a rough start. Understanding
and forgiving each other is a difficult endeavor. What do you know about subtle matter? It was a theory developed by Valentine Darlin, the leader of sea consciousness. Apparently, he's now become the image of the representative. Back in the day, he ridiculed my calculations regarding the existence of the noosphere, while I firmly believed that subtle matter was unscientific. In the end, I turned out to be right. But if he was also close to the truth, that changes everything. According to his theory, subtle matter can preserve a reflection of a person's mind, their personality. If you're implying the representative is real, that means they actually succeeded. Before me, S.T.A.L.K.E.R was the only one who'd spoken to the representative. That was back in 2012, before sea consciousness died. S.T.A.L.K.E.R managed to reach the center of the zone and return unscathed. Then S.T.A.L.K.E.R probably knows more about subtle matter than I do, along with the sea technologies that sea consciousness has mastered during their 6 years of frenetic activity. Chances are, he's still researching it to this day. That's why I'm looking for S.T.A.L.K.E.R. Word is he's back in the zone. I haven't seen him in quite some time. Maybe that's for the best. Our perspectives on the zone have probably developed quite differently over the years. If your information is correct, I doubt he's ventured too far from the cordon. Men like him tend to develop a deep attachment to a place they regard as their own and refuse to let go. I want to find out if subtle matter is real. Things like this shouldn't be left to blind faith. The scientific method isn't just about the experiment. It's about being able to replicate it. And I happen to know how to test a few of my hunches. If only Valentine could see me now. Well, perhaps he can. We tried to connect to the noosphere as an experiment in the Orbiter underground lab. Back then, I saw nothing like the afterlife. But now, with the zone, I think the truth is worth taking a risk. But first, you need to get the cartridge from the signature station in a different lab, X3, near the cordon. It's been 20 years, so the entrances I knew of are long destroyed, but stalkers always find a way. Talk to Sidorovich, he's in charge of the cordon, and could have heard some stories about X3. I'll send you the code to the cartridge slot. Take it and head to Orbiter. Good luck.
wasn't easy, but thank you. It's important to remember that not all of us are like these caged dogs. We can make our own choices. Something's wrong. Thought you could wipe us all out, huh? Well, guess what? I'm still breathing, and I ain't gonna hide anymore. Come to the eastern checkpoint, and I'll give you a warm welcome. يلا I swear, please don't! No! Don't shoot! I want to join you! Yes! That's what I want! Take me in! Oh, great monolith! Embrace another son into your ranks! Hello. When a scientist offers you a job, think real hard. They don't give a shit. See you around. Well, just like old times. The zone's freaking out. The Monolithians shoot whatever they see, and Stalkers are jumping at their own shadows. But none of it affects business. It just keeps getting better and better. I need to get to X3. Do you know where it is? I am busting my ass, trying to find it, and you waltz in here expecting me to serve it to you on a silver platter? How the hell did you get word of it?
The doctor told me about it. You're quite a well-connected stalker. If it's the doctor himself, those rumors must be true after all. All right, let's cut to the chase. I don't give a damn why the hell you want X3. But since we're both in the know now, how about a little swap? I'll tell you what I know, and you do me a favor. Deal? You got any gossip about X3? I'm all ears. Let's put it this way. If these stories pan out, it's a win for both of us. The Cordon and me. That's all you need to know for now. What do you want me to do? I need you to retrieve a package for me. Some thugs after the courier who was supposed to bring it to me. My men found him dead, and the package was missing. I really don't like folks sticking their ugly noses in my business. Do you catch my drift? Okay, I'll get your delivery back. Where did your people find the courier again? Not far from here, near the old vehicle station. Just make sure the package gets here in one piece. As for the bandits, do whatever you want. If you take them out, I might even add a tip. Good hunting, Stalker. So quiet this time, Skiff. My men have had you in their crosshairs for a while. You want to talk? Back at the commissary, we managed to part on good terms. Maybe we can do that again. Come on in. Keep your cool, and the guys will let you pass. You have my word. Looks like we can kiss the dough goodbye, bro. I told ya. Never take a gig unless they pay up front. Don't worry, the clock's ticking. What the fuck We're is over that? here fucking around. Where'd you dig while this your thing up? step's getting bigger. If this script doesn't You'll show end up with a we'll bullet just in your dome if this sell thing these jams in a packages fight. somewhere else. Clean it up. Must be pretty You've got the whole disappeared, arsenal pay tonight. that much for And if I spot even one speck of dust... Ugh, what a dumbass. Zero discipline. And I can't say I'm thrilled to see you either, Skiff. I know your type. Wherever you go, death follows. Well, whose pretty little toes have I stepped on this time? I doubt you're here to catch up with an old friend. You crossed Sidorovich, and he's not happy. Fuck. I had a hunch that courier job was fishy. But, you know, in times like these, you gotta do what you gotta do to survive. I need the cargo that Sidorovich's courier had with him, Roosevelt. Sure, I'll hand it over. On one condition. The last thing I need right now is a war with Sidorovich. But after this, he'll probably shoot me on sight. However, he might be willing to talk about our fate with you. कोई ना BMG भाई मैं हूँ स्ट्रीम में अच्छा वर्मा भाई कह रहे वैसे BMG भाई ऐसा भी तो हो सकता है Hand me the package and I'll pass your apology मजे ले on रहा to हो अकाउंट Sidorovich. बनाकर हाँ ये भी हो सकता है
You sort it परमा out with भाई, him. परमा ऐसे and क्यों I'll owe करेगा? you. ये भी बात है. You have my word. परमा भाई वैसे चूती है, पर कभी कभी दिमाग दौड़ा देते हैं. यार मच्छर लगने लगे लोंडो. मैं ना स्ट्रीम एंड करूं. 2:35 हो गए वैसे भी. 3 घंटे की स्ट्रीम करनी थी ना, हो गई ना 3 घंटे की बस. You are alive, you lucky dog. You were looking for a package. I got it. Now tell me everything you know about X3. I knew a stalker once called the Marked One. Much like you, he jumped into all kinds of risky gigs. No questions asked. A valuable and rare talent. Folks like that are where Zone legends come from. Guess I shouldn't ask what happened to the bandits, huh? The bandits don't want to start a war with you. They said they didn't know the courier was yours, and they're hoping you'll understand. They realized whose pie they stuck their fingers in, huh? Fine, they can live. I'll find some use for those idiots. So, you want to hear about X3? All right. Here's the scoop. Not long ago, a little birdie told me the swamps were swarming with folk looking for artifacts. All because someone found a way into an old base, proving the rumors right. The bald forest prick kept bragging about how business was booming. I was intrigued, so I started digging into our local goss. And the most interesting rumor I heard was about the oasis, right here at the cordon. The oasis? What's that? A stalker's dream come true. A Klondike with more artifacts than you can shake a stick at. Imagine the opportunities if this legend happens to be the real deal. What is the link between the Oasis and X3? I've seen some documents where it was listed under the number 3. Oasis, 3, your ex, also 3. See where I'm going? We're looking for the same thing. Or at least, for something closely connected. Because according to those documents, the only way to the Oasis is through the abandoned laboratory. But here's the catch. We have the key to the door, the decoder you took from the bandits. But where is this door? Hell knows. Who told you about the Oasis anyway? Somebody who's got full of shit written all over his face. He was just messing with me. And when the time came to back it up, he vanished. Poof! Gone for good. Are you suggesting I find the entrance myself? Where? Not just suggesting. If we are the only ones who know the way to the Oasis, that information could be worth a pretty penny. As for where, ask the locals. Someone might have heard more than I. Sometimes even campfire gossip ain't all bullshit. दोनों हम स्ट्रीम को एंड करते हैं, ठीक है? रुक जाओ, एंड स्क्रीन प्ले कर लेता हूँ.
तो लोंडो आज की स्ट्रीम में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर किसी स्ट्रीम में, फिर किसी एपिसोड में। तो तब तक गुड बाय, सी इन दी नेक्स्ट स्ट्रीम, सी इन दी नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एपिसोड को लाइक एंड शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ, बहुत ही मजा आया। तुम लोग की बकचोदी कर रहे थे, मैं तो गेम पे ध्यान था मेरा ज्यादातर, बट तुम लोग जो भी बकचोदी करते हो मजा आ जाता है भाई, ठीक है? चांद चांद लगा देते हो, ठीक है? चांद चांद जो भी होता है, ठीक है? बट एंड में एक भाई के लोड़े लग गए, ठीक है? एंड में बड़े एक भाई के, कोई बात नहीं, ठीक है? तो अब एंड करते हैं, ठीक है? कितने बज रहे हैं? 2:40 हो गए भाई। अभी सोते सोते 3:30 हो जाते हैं, मेरे को 4 बज जाते हैं। तो लोंडो ठीक है, बाय। अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से सुबह, वही रूटीन अपना फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ की लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? और फिर कल डेट्रॉइट या दूसरी गेम स्टार्ट करेंगे, है ना लोंडो? ठीक है, ओके बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट सबको, ठीक है? गुड नाइट BMG में, हाँ गुड नाइट सबको, ठीक है? बाय बाय। कितनी रह रही है स्टॉकर 2? लोंडो 4 घंटे की और बची है स्टॉकर 2। नेक्स्ट स्ट्रीम में खत्म कर देंगे, है ना, गेम को फाइनल एपिसोड में। 4 एपिसोड में निपटा देंगे स्टॉकर 2 को। तीसरा एपिसोड था ये, चौथा एपिसोड फाइनल एपिसोड होगा, मतलब कल निपटा देंगे स्टॉकर 2 को, ठीक है? आज एसेसिन क्रेस्ट शैडोज निपटाई थी, कल स्टॉकर 2 को निपटा लेंगे, ठीक है लोंडो? ओके बाय बाय, गुड नाइट। यार थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे लिया करो भाई। स्ट्रीमिंग देखते हो अच्छी बात है, बट थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया करो। फैमिली की बात, फैमिली अगर तुम्हें अलाउ कर रही है फ़ोन चलाने के लिए, तो तुम भी फैमिली की बात मानो, ठीक है? अगर फैमिली तुम्हारी बात मान रही तो तुम भी फैमिली की बात मानो, ठीक है? ऐसे भाई फैमिली आ जाती, पेरेंट्स आ जाते लाइव स्ट्रीम पे, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ओके बाय बाय लोंडो। मेरे को बोलते तुम लोगों के पेरेंट्स की मैं रिमूव करूँ, मैं कहाँ से रिमूव कर दूँ यार? हाँ ओके भाई लोंडो यार। वही बात होगी, पेरेंट्स आके बोल रहे टीचर को कि बच्चों को पढ़ाओ हमारे।